Hello students, welcome to the next lecture on the optimization technique. Today I will explain you very brief idea about what is the simplex meaning. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. अगर मैं आपको कुछ एक LPPs दूं, for example the maximization problems or the minimization problem, what is your target related to these LPP? Obvious that your target is how we can find the optimal solutions of such kind of the linear programming problem. And we know we have already discussed there are the various methods and few of them are known as graphical methods, basic feasible methods, simplex methods and many more others. However, the graphical methods and the basic feasible method that we already discussed in our previous lectures. And that lecture you can find at my playlist optimization techniques. You can see the graphical methods and how we can find the BFS of the LPP. So these playlists you can follow it and learn the concept easily. अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द सिंप्लेक्स मेथड फाइन एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड. अगर हमारे पास ये दो ऑलरेडी मेथड थे हमारे पास तो हमें सिंप्लेक्स मेथड की जरूरत क्यों पड़ी. फाइन, लेकिन आपको मैं डायरेक्टली सिंप्लेक्स मेथड में मूव करने से पहले आपका ये जानना बड़ा जरूरी है व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द सिंप्लेक्स. और फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड द वेरियस टर्म्स लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंप्लेक्स. Simplex method nahi, what is the simplex meaning? Fine, why simplex method is needed, what is the principle of the simplex method, how the simplex method work and what is the condition for the optimality of the simplex method. तो इन सब के आंसर वन बाय वन करके हर वीडियो में हम देखेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है आपको व्हाट इज द सिंप्लेक्स. फाइन, तो सिंप्लेक्स इज एन ऑब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन सिंप्लेक्स. The simplex represents an object in the n-dimensional space which are connecting n plus 1 point. For example, अगर मैं जीरो dimension की बात करूं, fine, if I consider the zero dimension, so that means n is my zero, so they are connecting the 1 point. If I call as a one dimension, fine, so how many points they will connect it? 2 points. और आपको सबको मालूम होगा कि अगर आपके पास ये दो पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करो तो क्या बनेगा आपके पास, दैट इज माय लाइन. अगर आप टू डायमेंशन पे हो दैट इज इन द R2, फाइन, देन यू नीडेड द 3 पॉइंट्स. अगर आप 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो क्या बनता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रायंगल. फाइन, सिमिलरली 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो रेक्टेंगल, स्क्वायर, फाइन एंड सो ऑन. So we can say when you have a zero dimensional simplex, it is a point. What is the meaning of the one dimensional simplex? Is a line segment. Two dimension is a triangle, tetrahedral and so on. Clear? Now, अगर आप ये कह रहे हो कि अगर आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे आप, तो ज्वाइन भी कैसे करेंगे. अगर मेरा पॉइंट ये x1 है, that point is my x2. How you can join them? I can use as the convex linear combinations. The simplex, so what is the formal definition of the simplex is, simplex is the set of the points x0, x1 up to the xk such that the coefficients lambda naught, lambda 1 up to the lambda k, the sum must be 1 and each number greater than 0. और अगर आप इस definition को previous convex set के साथ लिंक करें तो that is my convex linear combination. यही थी ना डेफिनेशन convex linear combination की, जिसको हम क्या बोल देते थे, CLC of the given points. Fine. For more details, you can watch my lecture of the convex linear combination, CLC of the vector. Fine. Now, another way we can define the simplex is based on the polytope. Fine. Polytope क्या है, मान लो आपके पास एक hyperplane है. Fine. Consider the hyperplane. Hyperplane की इक्वेशन क्या होती है, C ट्रांसपोज X इज इक्वल टू B. फाइन, तो अगर आप एक, दिस इज माई हाइपरप्लेन, तो मान लो आपके पास दूसरा हाइपरप्लेन है, थर्ड हाइपरप्लेन है, फोर्थ हाइपरप्लेन, फिफ्थ हाइपरप्लेन, सिक्स्थ हाइपरप्लेन, ये ऐसे कुछ हाइपरप्लेन है. दैट मीन्स इफ यू कंसिडर द फाइनाइट नंबर ऑफ द हाइपरप्लेन, फाइन, फाइनाइट हाइपरप्लेन, फाइनाइट नंबर ऑफ द हाइपरप्लेन, और सबका अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो ये कॉमन पोर्शन आएगा. Fine, and that is called as the polytope.
The polytope is a bounded region which are enclosed by the finite number of the hyperplanes. So that is the equation of the C transpose X is equal to B. This is the second equation of the C transpose X is equal to B. This is the third equation of the hyperplane and so on. Fine. And this color is called as the bounded region of the hyperplane. और अगर आप हाइपरप्लेन से नहीं देखना चाहते हैं, another ways we can define as the convex hull of the finite number of the point. What is the meaning of the convex hull? Is it is the smallest convex polygon, or you can say the polytope is the smallest convex polytope that are enclosed all the given points. Fine. अगर आपके पास दो पॉइंट्स है तो उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो भी आपके पास रीजन बनेगा, लाइक इन द 2D which are called as a triangle, square, hexagon and so on. But if you consider as a 3D, then we can call as a cube, pyramid, tetrahedral and so on. Clear? Now, based on this simplex, I hope you have understand the meaning of the simplex. So I can say that why we call as a simplex. The simplex is so named because it represents the smallest or the simplest polytope in any given direction. Or in other words, we can say the k-simplex is the k-dimensional polytope that is requirement of the convex hull by its k+1 vertex. अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल में आपको किस में बनाते हो आप 2D में. फाइन. तो इसके लिए 3 पॉइंट्स चाहिए. तो इसमें कितने आपके वर्टेक्स हो गए? देयर आर द 3 वर्टेक्स, दैट इज 2 + 1 वर्टेक्स. सिमिलरली अगर आप 3D में बात करोगे तो यू नीड द 4 वर्टेक्स फॉर representing my rectangles or square and so on. Clear? So the k simplex is a k dimensional polytope that is a requirement of the k+1 vertex. So this is about the simple idea about the simplex. So we will see the next lecture why the simplex method is needed and what are their benefits over the graphical methods and the BFS method. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.